This is very important for this year. In the given figure, ABC is a right angled triangle, right angled at A, in which AB is 6 centimeter and BC is 10 centimeter. I is the in center of triangle ABC. Find the area of the shaded region, and we have to use pi is equals to 3.14. So very simple. What we have to do, triangle का area minus area of circle करना है. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग को थर्ड साइड चाहिए, ये वाला. हाउ विल यू फाइंड दिस साइड, AC? Pythagoras theorem. Very good, by using Pythagoras theorem. So first we will find AC. So AC square, we can write BC square minus AB square. BC square is 10 and B is 10 square and this is 6 square. So 100 minus 36, we are getting 64. So square root of 64 is 8 centimeter. Right, so we got AC. AC मिल गया. Now we will find the area of triangle ABC. How will you find area of triangle ABC? Half into base Half into base height. into Very height. good. Half into base into height. So base हम लोग इसको ले सकते हैं, height ये हो जाएगा. So half into 6 into 8, that is what we are going to get, 24 centimeter square. So we got the area of triangle. अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस, राइट. सो मान लो इसका जो रेडियस है r ले लेते हैं, ओके. उसके बाद हम लोग आई बी और आई सी को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस भी ड्रॉ करेंगे. देखो, दिस फिगर इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so let the radius be r, और यहाँ का भी रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं r. So how will you find the area of triangle ABC in other way? Area of triangle AOB plus area of triangle IAB plus area of triangle IBC plus area of triangle IAC, in this way. Now what is the area of triangle IAB? Half into AB into R, और इसका IBC का half into BC into R. And what about ICA? Half into AC into R. Whether this is clear? And the sum is equals to 24 centimeter square. Already we got the area of triangle. So इसमें हम लोग क्या common ले सकते हैं? What common we can take from all these three? R by 2. Right, half into R. If we take half into R common, we'll get AB plus BC plus CA. Now all these three values we have with us, right? So what we will do, that is 6 plus 10 plus 8. So we are getting 24 by 2, that is 12R. So what is the value of R here? 2. Yes, 2 centimeter. So now area of shaded region. अब हम लोग का सर्कल का रेडियस निकल गया. So सीधा सीधा कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, right? Area of triangle we already got 24, and area of in circle will be pi r square, and the value of pi is already given in the question, 3.14. So 3.14 into 2 into 2, this will be 12.56, and the final answer is 11.44 centimeter square. Any doubt here? No, sir. Okay, so इसको हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं. Shall I explain that method? Yes, sir. एक मिनट, इधर देखो, इसको Yes, इसको हम लोग R ले लिए, राइट. ध्यान से सुनो जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ. इसको हम लोग पी क्यू और R ले रहा हूँ मैं इसी शीट में समझा रहा हूँ. अब हम लोग के पास ये वाला 90 डिग्री है, ये भी 90 हो जाएगा. क्यों? Why this is 90? Tangent is perpendicular to the radius. ये भी 90 होगा. Tangent is perpendicular to the radius. So यहाँ पर ये दोनों इक्वल है. देखो क्यों? Length of the tangents drawn from an external point are equal. So ये एक स्क्वायर हो जाएगा. Is that clear?
Yes, sir. स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी r होगा और ये भी r होगा. So what is the length of CQ? 8 minus r. And what is the length of BR? 6 minus r. So ये भी 6 minus r हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 minus r. Now what is the length BC is given? What is the length BC is given? 10 centimeter? 10 centimeter. Okay, that means the sum of these two must be equals to 10. So 6 minus r plus 8 minus r will get 14 minus 2r. 14 minus 2r is equals to 10. इसमें r कितना आ रहा है देखो. 2r is equals to 4 and r is equals to 2. 2. So in this way also you can find the value of r. But I feel this method is very easy. What is your opinion? Yes, sir. Okay, fine. Yes. Yes, sir. So किसी बुक में ये वाला मेथड भी दिया हुआ है. So you should not confused. ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं.